recently, many smartphones under 25 to 30K have been launched, and now Motorola has launched the Moto Edge 60 Fusion. If you remember Edge 50 Fusion, it was a hype phone and लोगों को काफी पसंद भी आया था. But क्या Motorola Edge 60 Fusion में better upgrades हैं या नहीं? Let's find this out together in this video. So don't skip any part and subscribe to Gadget 360 for more such unbiased review. I am Harshit Arora. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं. Motorola Edge 60 Fusion design wise काफी attractive है. You get a textured vegan leather finish on the back with Motorola branding. Side frame plastic की है, but if you see device from a distance, then it looks like metallic. On the right side, you get all the control, and the left side is all neat and clean. The Moto Edge 60 Fusion comes with a 6.7-inch POLED 1.5K all-curved display. The bezels on this device are very minimal, which gives you bigger display to enjoy content. The display is superb. You get a 4500 nits peak brightness with this device, which is also visible in outdoor condition. And to be honest, display और lightweight design की वजह से this phone feels like an expensive phone. But the problem is that the vegan leather finish attracts a lot of dirt and phone काफी जल्दी गंदा हो सकता है. You don't get a case in the box, which means आपको केस अलग से लेना पड़ेगा. One more downgrade is that you get 120Hz refresh rate panel now, but with last year Moto Edge 50 Fusion you get a 144Hz panel. ऐसा क्यों है? I don't know. In-display fingerprint sensor works decently, and same goes for haptics also. So, the Motorola Edge 60 Fusion comes with Dimensity 7400 processor. जो डिवाइस हमारे साथ शेयर हुआ है, it comes with 12GB RAM and 256GB UFS 2.2 storage type. We run multiple tests on this device and उन सभी के results आपके स्क्रीन पर हैं. N22 benchmarking के result is almost 7 lakh, which is fine, but we are not going to rely on these scores only. Real life users में device कैसा perform करता है, ये ज्यादा matter करता है. So first of all, you don't see bloatware apps. आपको stock Android मिलता है, which is good. I tried BGMI, Call of Duty and Asphalt on this device, and the performance was decent. We can play BGMI at graphics at smooth and frame rate at extreme. The gameplay was decent. Device कुछ खास हीट भी नहीं हुआ. फ्रेम ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम्स मेरे गेम प्ले के दौरान मुझे नहीं आई. जायरोस्कोप काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, बट यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड. ऐप ओपनिंग में डिवाइस थोड़ा सा डिले शो करता है व्हेन यू फर्स्ट टाइम ओपन एनी ऐप या बैकग्राउंड से आपने उसे रिमूव कर दिया हो तो. बट इफ यू स्विच फ्रॉम वन ऐप टू अनदर, देन देयर इज नो डिले. बट आई थिंक UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के बजाय इससे बेटर ऑप्शंस दिए जा सकते थे, जिससे परफॉर्मेंस और बेटर हो सकती थी गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग यूजेस के दौरान. यू ऑल्सो गेट मेनी यूजफुल AI फीचर्स लाइक समराइज नोटिफिकेशन, जनरेटिव AI एंड मोर, जिससे आप नोटिफिकेशन समराइज कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वॉइस नोट को समराइज कर सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ. एंड द कूल पार्ट इज दैट व्हेन यू डबल टैप ऑन द बैक, देन द डिवाइस एक्टिवेट्स ऑल दीज AI फीचर्स फॉर यू. Moving on to camera, Moto Edge 60 Fusion comes with dual rear camera setup. I know you see a triple camera and a flash, but the third one is a 3-in-1 light sensor, which is for ambient light plus flicker reduction plus RGB sensor. इस तरह का कुछ है ये. This camera setup also supports macro. You get a 50 megapixel primary lens with a 13 megapixel ultra wide lens, and the camera is not too bumpy either. Performance की बात करें तो daylight में it can capture really detailed picture, and pictures are vibrant and you can see a good dynamic range as well. If we talk about the portrait mode, then you will see a 50mm option too. Means you can consider it as a 2x portrait option. The pictures are detailed, but if you look closely, then you can see कि कहीं पे edges सही से detect नहीं कर पाया है, which can be improved. In low light condition, the camera is performing quite good. Pictures are not grainy and you will see good details. But जहां extreme low light है, वहां थोड़ा सा detail miss होता हुआ जरूर आपको महसूस होगा. On the front side, you get a 32 megapixel selfie shooter, which is almost the same as the rear one. Quality wise अगर बात करें, फ्रंट से ली गई पिक्चर्स डिटेल्ड होती है, स्किन टोन नेचुरल रहता है, डायनेमिक रेंज इज क्वाइट गुड एज वेल, एंड यू डोंट सी मच ब्यूटिफिकेशन इन द पिक्चर्स. तो काफी रियलिस्टिक सेल्फीज जो है इससे आ सकती है. सेल्फी पोर्ट्रेट्स आर ऑल्सो द सेम.
उसमें सेम वही एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम आपको मिलता है। बट बोथ द कैमरास कैन रिकॉर्ड अप टू 4K एट 30 FPS, चाहे वो बैक हो या वो फ्रंट कैमरा की बात करें। वीडियो कम आउट डिसेंट विद गुड डिटेल्स एंड कलर्स ऑल्सो। Moving on, let's talk about the battery. The Motorola S60 Fusion comes with a 5500 mAh battery, which on a single charge can last for a day for a normal user. But if you use device almost all time, then I think you need to charge it again, मतलब evening. But the good part is that you get a 68 watt PD charger with this device, which can charge the device 100% in just 44 minutes. And you can charge the device from 0 to 50 in almost 15 minutes only. So it's verdict time. So first of all, let me tell you, Motorola S60 Fusion starts from 22,999 rupees. So what I feel is that Motorola S60 Fusion looks the most attractive phone under 25K currently. This phone surely gives you a premium in-hand feel and you can use it single-handedly also. Performance is decent. You can play BGMI and Call of Duty जैसे सभी games at decent graphics. But yeah, this is not the hardcore gaming phone you want in this budget. The camera is good in daylight and low light conditions also. You see a good dynamic range and detailed pictures also. Portrait pictures are good. Only the edge detection needs some work. You get a big battery that lasts longer and you get fast charging support also. So if you are someone who wants a phone जो दिखने में expensive लगे, decent performance दे दे, एक अच्छा कैमरा आपको दे and शानदार बैटरी सपोर्ट आपको मिल जाए, तो Motorola S60 Fusion is a good option for you. Well, what do you think about this phone? Do let me know in the comment section and subscribe to Gadget 360 for more such unbiased review. I'm your host Harshit Arora signing off, but I'll see you in the next one.